Question, please raise your hand again and we'll come back to you if the time permits. We'll start. Okay, please, first question. I just want to know from the squad that you've announced, how close are you to finalizing your World Cup squad? I mean, it's really a no-brainer. We've picked these 18 guys, so it'll be in and around those guys. There's few important guys who are coming back from injury. Hopefully, all goes well with them. They've got a few games now, in the Asia Cup. So yeah, it'll be close between these guys. But fortunately, we have some more time. 5th is the deadline, and we'll get to look at the players. There's a short camp followed by a couple of games before we announce the actual squad. But yeah, it'll obviously be around these guys only. Yeah, it's but obvious. Rohit, my question is to you is that how do you see the role of the Hardik as a proper all-rounder or a proper batsman in the particular Asian conditions? Like Hardik, as you see him a proper batsman or a particular all-rounder who can be for the slots, all the shots. Like he can come in at any number from 5 to 8. Yes, he can, and we have seen it over the years what he does. So uska jo role hai, it is going to be same. To bowl overs, bat the way he bats, and then field. There's nothing different that we want to ask him to do. What he does is probably what is required for us, and if he keeps doing that, I think the team will be very well balanced. Rohit, still Asia Cup left before the World Cup, but you think the lead up to the World Cup so far has been good enough and you go into the big tournament as hosts, as favourites? No, I mean, honestly, I don't believe that thought process of being favourites and underdogs and things like that. You just have to play well to win the tournament, to win games. It is as simple as that. It is for outside world to create that scenarios, situations, underdogs, favourites. You have to play well. All oppositions will be here to compete, and they'll be here to compete hard. We know that. We do understand that, and it can give you a little bit of advantage playing in your own conditions, to know the conditions better. That's all. Nothing more than that. Even a lot of these guys, the outside teams, they play in India a lot. They are very much aware of the conditions as well these days now. So there's again no such thing as being favourites or underdogs and things like that. I think as far as our prep is concerned, I think this is the right tournament for us to go and perform well, test ourselves, try and put ourselves under pressure, and respond to that pressure. That is how it is going to be, and that's how it has been before the World Cups for all of us, even previous years as well. So it's all about just collecting everyone's thought and getting together as a group and getting the job done. Ajit, could you talk about Tilak's inclusion? He's also part of the Asian Games T20 squad, which clashes with the start of the World Cup. Given that this is a 17-member squad, is it about giving exposure here, or do you see him as a real chance of even making the World Cup? Yeah, look, I mean, like you said, he's part of the Asian Games. This isn't the World Cup squad. If he does make it, then that's irrelevant. So, yeah, but we've got the luxury of picking 17 right now. So, fortunately, we could give him. We saw some real promise. We've obviously known the potential in the West Indies. We saw some real promise in terms of not just performances, but the temperament. And it gives us an opportunity to take him with the team, give him, like you said, some more exposure. Left-hander again. And looks very promising. So, fortunately, we can take 17 here. It'll be 15 in the World Cup. So, when the time comes, we'll probably make that decision. But at the moment, it at least gives us an opportunity, gives the coach and the captain an opportunity to have him with the squad. KL राहुल और श्रेयस अय्यर के फिटनेस को लेकर जब आप लोग सिलेक्शन कमेटी में थे तो लेटेस्ट अपडेट क्या थी और क्या अब वो कम्युनिटी मैच पे कभी तक पहुंचते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. आई थिंक दोनों का लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ सीरियस इंजरीज. आई थिंक श्रेयस is been declared completely fit. I think Rahul ka last कुछ दिनों में not his original injury, but there is a
niggle that unko hai. That's why Sanju is at the moment traveling. But the physios, I'm sure you all will get a report at some stage. He's expected to. We are all expecting him to be fit. If not at the start of the Asia Cup, maybe the second or third game. That's at the moment the diagnosis. But he's well on track. But Shreyas has been past fit, which is good news. Two important players for us here, and we still don't pick the team. हम लोग 5 तारीख तक World Cup की team pick नहीं करनी, so gives us more time. रोहित, सवाल आपसे ये कि नंबर 4 को लेकर अब काफी पसंद चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बातचीत हुई है नंबर 4 को लेकर, क्योंकि अब एशिया कप फिर उसके बाद वर्ल्ड कप. You've got guys who can bat at number 4. It's not about number 4. It's about top 3 and then there onwards, 4, 5, 6, 7 to get the job done. It's not just one position who can win us the game or win us the tournament. I think it's about the entire unit, batting unit coming together and getting the job done. There have been challenges, guys have been put under pressure and things like that, which is a good thing. But unfortunately, we've had few injuries along the line, so we had to try and see the other players in that position, try and rotate. There were a lot of players who missed out because of workload management and stuff like that, so we had to get someone else. And at the same time, try and, see what combination suits you. We tried Aksar at number 4, being a left-hander, go and play freely, things like that. So we've tried stuff, and once we get into the World Cup, we want to be rest assured that this is what we want to do. We've got 6 and 3, 9 ODIs, I guess, before we play our first game, plus the two practice games as well. So there's a lot of games that we have that we can give these guys to go and bat and make that position their own. अजीत, क्वेश्चन टू यू एंड क्वेश्चन फॉर कैप्टन अजीत, एक तो केएल राहुल की आपने फिटनेस की बात की, हम सब जानते हैं वो विकेट कीपिंग भी कर रहे थे. इज ही दैट फिट कि वो वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में विकेट कीपिंग कर पाएं? एंड रोहित, एक छोटा सा सवाल आपसे कि इस वक्त अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम में कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं. 2011 वर्ल्ड कप में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर पा रहे थे. इस वक्त थोड़ा सा सीनियर प्लेयर्स में वैसा रोल हम नहीं देख रहे हैं. तो डू यू सी इंडियन टीम लेस प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स कैलिबर कंपैरिजन इफ वी कंपेयर इट विद 2011 वर्ल्ड कप? अजीत, First answer in the bowling one, I'll answer Rahul ka. Rahul, yeah. No, I think obviously Rahul plays as a wicketkeeper batsman, तो इसमें कोई और कोशिश वही है कि फर्स्ट मैच से फिट हो, और उम्मीद भी वही है क्योंकि दोनों की, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म इंजरीज थी एंड देव डन रियली वेल ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स फिट होने को. जो भी मैच सिमुलेशन था या जो भी देव गॉन थ्रू, ये छोटा सा सेटबैक है केएल राहुल के लिए, लेकिन वी आर ऑल होपफुल कि ही विल बी ओके. बट जो आपका सवाल था, ऑब्वियसली कीपिंग बैटिंग करके उनका रोल है टीम में, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, नीडलेस टू से. That was the team of 2011. They had the individuals who could bowl, who could bat. जो आपके पास अवेलेबल रहता है आपको उसी से काम चलाना पड़ता है, और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो बेस्ट है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको चांसेस देते हैं. यू कैन नॉट overnight create someone who can bowl in the team. It is not like that. All these guys are batters and they've scored runs. That is why they are part of the team. But hopefully, Sharma and Kohli can roll some arm over in the World Cup. Yeah, we've convinced them. Chairman or captain can answer. The question is, if Rahul supposedly doesn't get fit, Ishan Kishan has done so well in West Indies. We have opened the batting. We have 2 form openers, Rohit Sharma and Shubman Gill. So where does Ishan Kishan fit in if he's playing in the first 11? In the middle order, because he has played as an opener and scored runs. Yeah, look, I mean, Ajit honestly has just come into the picture, so he's not had
a lot of conversation around what was happening before that. Obviously, he's joined us recently, so I've tried to keep him updated as much as I can. But look, one thing I want in this team is to make sure that everyone is okay to bat anywhere. That is one thing that we need to keep in mind. It's very critical moving forward as Team India, not just in this format but any format, because cricket is moving in a different direction. You need flexibility. You need guys who can step up at any position. No one should be in the team saying that, okay, no, I'm good at this position, I'm good at this position. We want guys to be able to bat anywhere they can. And that is the message that has been conveyed to every individual, not now. It's been happening for last 2, 3, 4 years. So I know it's tough for you guys outside to understand कि ये 6 नंबर पे खेल रहा था कल, आज 4 पे क्यों खेल रहा है. बट उनको मैसेज दिया गया है, प्रिपेयर्ड किया गया है. This is international sport you are talking about. It's not a club cricket that we are talking about. They should be able to go and bat anywhere, wherever the team requires them to do it. So it's not like कि हम रात को सोते हैं ये पोजीशन बोल के प्लेयर को सुबह को चेंज कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है. उनको क्लियरली बताया जाता है कि this is what we want in this tournament. You should be able to bat anywhere, wherever the team requires you to bat. We don't want to be you don't want to be handicapped or stuck with one player batting in one position only. You don't want that. Of course, having said that, you want to get the best out of players in certain positions, but all 7, 8 numbers are open to anyone. Anyone can bat anywhere. That is the message that has been given to everyone since so many years. Like I remember कब से चल रहा है ये बात. So it's not like कि हम कल सुबह उठ के मैच के दिन बता देते कि आज ऊपर जाओ, कल नीचे जाओ. ऐसा नहीं है. ये लड़कों को बोला गया है कि this is what the team requires. You should be flexible. Hi, a question to the chairman. But was there any discussion with regard to Shikhar Dhawan? Or going forward, is he not going to feature in the scheme of things as far as selection community is concerned? I mean, at the moment, we've just spoken about 3 openers here. Rohit is not a bad player. Shubman's, had a phenomenal year and a half, 2 years. Ishan Kishan's, Shikhar's been a terrific player for India. We know his record. We know what he's done. I think since December, I don't think he's been. Was his last thing. So, look, he's been a terrific player. But at the moment, there are 3 guys who are doing really well. So, you can only fit 15 in a team. So, unfortunately, sometimes somebody has to miss out. So, these 3 guys have been prolific for India. So, at the moment, these are our preferred openers. Yeah, I'll go ahead. My question is for the selector, sir. Was there any talk about the visibility channel? Were there discussions on him to be included on the issue as well? Yeah, there was, of course. I mean, he's again, like we spoke about Shikhar before, again, terrific performer for India. But sometimes it's just the balance of the team or the combination. You're looking at guys, Akshar Patel's done really well, who can bat as well. Kuldeep's obviously had a fantastic run at this point. And to fit 2 wrist spinners might be difficult. So, like I said, you can only fit 15. At this point, 17. Okay, we're a little bit fortunate that we can take a couple extra guys. But otherwise, to fit 2 wrist spinners, so unfortunately, one has to miss out. And at this point, I think Kuldeep's a little bit ahead of him. So, gives us a different kind of option, Kuldeep. And unfortunately, he has to miss out. Yeah, for the chairman and the captain. Sir, was there a temptation to kind of just taking cue from her on the spinners bit to include an off spinner probably just to avoid the situation of not having 2 wrist spinners? So was there a discussion on probably having 2 off spinners or even 1 off spinner? And for the captain, in the last 10-11 months, injuries have been kind of troubling the squad's balance. So now when you look at the team sheet and the squad sheet going forward, for the seamers than the spinners to grip the one days का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो एशिया कप के लिए हम बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी play any games, but we've still got month and a half to go for the World Cup. तो अतिरिक्त कद और कुलदीप यादव, तो एक ही रिस्ट स्पिनर, एक ही बहुत जरूरी है. और इतनी विस्तार से रोहित शर्मा ने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में
एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नंबर ओपनिंग बैट्समैन नंबर 8 नहीं खेल सके। कप उसके बाद विश्व कप या फास्ट बॉलर लगे तो हमको देखना पड़ता है कि फास्ट बॉलर कौन अच्छा। बार हमने देखा है कि इस पोजीशन को लेके कंफ्यूजन है और बाद में हो सकता है वही पोजीशन को लेके सब गड़बड़ हो जाए, तो आपकी फिलॉसफी क्या है? रोहित ने ये नहीं कहा कि कोई भी कहीं भी खेल सकता है, उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में होनी चाहिए प्लेयर को तो अपना रोल पता ही होता है कि आप कहाँ खेलने वाले हो, कौन से ओवर आपको लगता है मैच में आप करोगे, या कोई न्यू बॉल बॉलर नई गेंद से बॉलिंग करता है या मिडल ओवर्स डालता है, वो तो रोल आपका सेट होता ही है। लेकिन जैसे जैसे गेम इवॉल्व होता है या टूर्नामेंट इवॉल्व होता है, मे बी आप किसी का फॉर्म देखते हो, कोई सिचुएशन देखते हो कि कौन सी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर के माइंड में होना ज़रूरी है। आई एम श्योर कैप्टन का भी एक प्लान ही होता है कि ये बैट्समैन यहाँ खेलेगा या इस तरीके से हम खेलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, जिसका फॉर्म बेटर हो या कोई अच्छा खेल रहा है, या किसी को किसी एक मैचअप की बात करते हैं, किसी बॉलर के खिलाफ यूज़ करना है किसी बैट्समैन को, उसकी बात हो रही है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। और उतना टैलेंट तो टीम में है ही, तो अगर टैलेंट है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। डजेंट मीन के रोल स्पेसिफाइड नहीं है, लोगों का रोल तो ऑलवेज स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि उसी से आप कंफर्टेबल फील करते हो। मैं समझा था आपको अच्छे से। नहीं समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखिए मैंने ये बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपनर को 7 नंबर पे भेज दो या हार्दिक पांड्या को ओपन करा दो, वो नहीं होता है। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पिछले 8-7 साल में ओपन ही किया है, कोहली ने 3 पे ही बैटिंग किया है। 4-5 नंबर पे जो नए लड़के आते हैं उनको ओपन रहना ज़रूरी है कि वो ऊपर भी बैटिंग करे, नीचे भी बैटिंग करे। तो आप अगर पिछले, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 5 साल या 4 साल में आप देख लो, तो जो ओपनर का प्लेस है वो ओपनर उधर ही बैटिंग करता है। 3 नंबर वाला 3 नंबर पे खेलता है। 5 नंबर पे केएल राहुल आ रहा था, वो 5 नंबर पे ही खेल रहा है। हार्दिक 6 पे आता है, वो 6 पे खेलता है। 7 पे जडेजा है। तो नंबर 4 और नंबर कभी 5 का अगर ऊपर नीचे होएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी टीम में ज़रूरी है। और हम जब टीम में आए थे, हमारे भी पोजीशन, आप मेरा बैटिंग पोजीशन ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, तो ऊपर से लेके नीचे तक बैटिंग हम सब यंगस्टरों ने किया। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि हाँ ये ओपनर है, इसको 8 नंबर पे भेज दो और 8 नंबर वाले को ऊपर करा दो। हमने ऐसा ये पागलपंती नहीं करते हम। थोड़ा ऊपर नीचे टीम में रहना ज़रूरी है। नहीं असर शुरू में कहा कि नंबर 6 पे कोई खेल रहा है, कल को आप देखते कि 3-4 पे खेल रहा है, ये आपने बोला था अभी। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर का एग्जांपल दिया मैंने। तो लेफ्टी है, बीच में स्पिनर डालते हैं, तो हम लोग को वैसा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जो स्पिनर को जाके मार सके। तो ये इतना तो रहना चाहिए। हम लोग ये स्कूल का वो नहीं चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ही चलेगा। यू नीड सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू बी, समटाइम्स सामने वाली टीम दोनों एंड से स्पिनर लगाएगी या फास्ट बॉलर लगाए, तो हमको देखना पड़ता है कि फास्ट बॉलर कौन अच्छा खेलेगा इस पीरियड में, तो उसको भेज दे। स्पिनर को कौन अच्छा खेलेगा उसको भेज दे। वैसा वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि तबाही मचाओ, ये नहीं। लास्ट 2 क्वेश्चंस। ऋषभ पंत को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास, या रोहित आपसे कोई? ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली अभी तैयार नहीं है। अभी आज के तारीख में जो रिपोर्ट है, एशिया कप के लिए वो तैयार नहीं है। एशिया कप से जुड़ा सवाल है। कमिंग एशिया कप में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। पाकिस्तान जैसी टीम है, आपको आगे वर्ल्ड कप के लिए भी बड़े मैच के लिए प्रिपेयर करना है। That means we are expecting we will face Pakistan in the final. So how prepared, how confident you are for the team upcoming Asia Cup? How prepared is the team? I mean, look, we have नहीं बिल्कुल। अभी देखिए, अभी हम बेंगलोर में हमारा 6 दिन का 5 दिन का कैंप है। बहुत लंबे समय के बाद हमको ऐसा कैंप करने मिल रहा है जहाँ पे हम सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके कुछ स्किल बेस्ड वर्क कर सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हमें ऐसा मौका नहीं मिला था, अभी अब मौका मिला है तो हमको उसको यूटिलाइज़ करना है। हम कोशिश करेंगे कि जो कमियां है हमारी टीम में, उस कमियों को वहाँ पर जाके वो करें, प्रैक्टिस करें
But see, again, it's not just Pakistan. You know, there are other teams. Sri Lanka won the Asia Cup last year. So there are other teams also who are playing good cricket and will challenge us. So हमारे को तीनों चारों टीम जो है उनके लिए प्रिपेयर करना है, ना सिर्फ एक टीम के लिए. एशिया कप के बाद हमारे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज है हमारे पास, तो एक बेहतर मौका होगा कि बेंच स्ट्रेंथ को भी हम पूरा चेक कर सकें और एक बढ़िया टीम जो है तैयार कर. देखिए, वर्ल्ड कप का सिलेक्शन तो आपका 5 तारीख को है, तो तब तक तो आपकी वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट ही हो जाएगी. तो पहले एशिया कप इज़ द मेन एम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का 1 डेज़ का प्लान कर सकते हैं. लेकिन इस वक्त तो एशिया कप के लिए हम प्लान कर रहे हैं, और आई थिंक 2 मैच, 2nd और 4th को 2 मैच है. उसके बाद तो वर्ल्ड कप की आपकी टीम अनाउंस हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया के 1 डेज उसके बाद प्लान कर सकते हैं. Thank you everyone. Thank you. Just the last question from Ajit, can you share some details as to what has happened with KL Rahul, the extent of that injury on niggle, and secondly, would you have preferred to have these players, both KL and Shreyas, play some competitive cricket before getting them straight into a tournament like Asia Cup, especially considering what has happened in the past with NCA? You know, so many players, almost a dozen players, have come out of NCA and have broken down time and again in the last couple of years. I wouldn't be aware if they were